Hello. Hello. Yes, ma'am. Good afternoon, Vita. Good afternoon, ma'am. Okay. Now, today we will discuss excretion. Yesterday, what we discussed? That is the part of genetics, Mendel's law, and reproduction. Is that clear? Any problem in reproduction chapter? Tell me. No, ma'am. No. That's very nice. So come to the excretion, and I have written respiration also. So first, the very important part and chapter, that is excretion. Okay? In definition, what you will tell, what you would like to say regarding excretion, how you will define it. Simply you tell. Yeah, Like frozen. certainly. So it is, in one line, you can say that removal out of nitrogenous metabolic waste. Okay? I have given stress on these two words, nitrogenous metabolic waste. Okay? Now, after definition, we will come on that point. Number of organs except kidney, we all know, except kidney, other organ involved in process of excretion. So first organ is what? Like lungs. ठीक है? Second, liver. Third, skin. And fourth is certainly kidney. ठीक है? So if I ask how the lungs involved in excretion, respiration you all have read. Yeah, removal out of carbon dioxide that helps the lungs. So during expiration and inspiration, lungs are involved. So here we will talk regarding this term, that is excretion, how the carbon dioxide is exhaled out. So that is also a part of removing out the metabolic waste. Is that clear? Now come to liver. We all know that bile pigments. What are the bile pigments? Two bile pigments. Are you recalling the name? Tell me yes or no. First. Yes. Bilirubin and biliverdin. Very good. Bilirubin and bilidivertine. These are the two bile pigments. So through liver they will be excreted out. और पता है ना, इसी के बाइल पिगमेंट बिलीरुबिन के इंक्रीज इन परसेंटेज कॉजेज द हेपेटाइटिस. सो पिगमेंट का काम क्या होता है? इट प्रोवाइड कलर्स, येलोइश ग्रीन कलर to the bile juice. So that waste material is removed out through liver. Now come to skin. How skin is involved? Already I have told in the class. These are the sweat gland, and here
this is hair follicle and this is sebaceous gland. Sebaceous gland that secrete sebum, oily secretion that keep the skin moist. So this is the hair follicle, this is sweat gland that is present, this is the dermal region and this is epidermal. So these are inserted deeply in dermal region of the skin. So through perspiration, sweating comes out, that is the perspiration through. So this sweat gland is involved in removing out the metabolic waste, that is the waste containing sodium chloride. ठीक है? And this is the hair follicle, this branch structure attached with this, it is sebum. Sebum is the secretion that is secreted by sebaceous gland. So in this way, skin is involved in excretion. I think all the three organs are clear to you. Yes? Ma'am, liver. Tell me. Ma'am, liver का. Liver. Two type of bile pigment. Name is bilirubin and bilidivertine. ये दो पिगमेंट हैं जो प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीटेड होते हैं लीवर से, ठीक है, और दैट इज प्रेजेंट इन बाइल जूस. ये दैट इज मेटाबॉलिक वेस्ट. ठीक है, तो लीवर हेल्प्स इन रिमूविंग आउट दिस टाइप ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी. and how the liver is involved. Is that clear? Any problem? No, ma'am. स्किन में थ्रू स्वेट ग्लैंड और यहाँ देखो हेयर फॉलिकल है दैट इज कनेक्टेड विद द ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, इसको कहते हैं सिबेसियस ग्लैंड दैट सिक्रीट्स सीबम विच कीप्स द स्किन मॉइस्ट ऑयली. ठीक है, सो this sweat gland excrete out sweat during perspiration and in that way it helps to remove out the metabolic waste. ठीक है, toxic materials. Is that clear? Now lastly come to the kidney. Yes, ma'am. It's very important part. And first of all you tell me where is the location of kidney? Anyone? Above the adult. Tell me where it is present, where it is located actually. Besides the vertebral column in lower abdominal segment. अगर चाहते हो तो लिख भी सकते हो besides the vertebral column in lower abdominal segment. In pairs, सबको पता है. Shape you all know, bean shaped structure. ठीक है, तो if the question is asked, write the physiology of kidney, 5 marks. So what you will write if the question is for 5 marks, then you will write external feature as well as internal feature both. So what you will write in external feature? First you make the diagram of the kidney. Is that clear? And this is the outer surface layer. It is tough in nature, protective in nature, and inside this, just see here in the diagrammatic representation, this type of structure present. और इसके ऊपर क्या होता है? Do you know the name of this gland? Adrenal. Adrenaline gland. Adrenaline नहीं बेटा, adrenaline is a secretion. It is adrenal gland. Endocrine gland है.
एंड इसका फंक्शन क्या है, वाई इट इज प्रेजेंट एग्जैक्टली इज हियर, क्या फंक्शन है? सेंसेशन देता है. हाँ नहीं, ये Sensation. एंटी डायरेटिक हार्मोन सिक्रेट करता है, मीन्स इट ओवरऑल रेगुलेट्स द कंटेंट ऑफ वाटर. ठीक है, सो इट हेल्प्स इन दैट प्रोसेस. यहाँ जो है देख रहे हो, आउटर रीजन इज कॉर्टेक्स, और इसको भी इंडिविजुअली अगर स्टडी करोगे एंडोक्राइन ग्लैंड को, इट इज ऑल्सो हैविंग 2 layers. Outer is the cortex, inner is the medulla. So this is the cortex and this is medullary part. Medullary part. ठीक है? And see here, 2 parts. You will write all these features in external feature. Make this diagram, level it properly, and then write what is present and what its function. ठीक है, in feature don't go in detail regarding function, only you write this structural pattern. समझ में आ रही मेरी बात? यहाँ देख रहे हो, ये स्ट्रक्चर है, दिस इज यूरेटर. ठीक है, एंड ये क्या है, पेल्विस, एंड दिस इज हिलस. ठीक है, और ये जो स्ट्रक्चर है मेडुलरी रेज, दैट इज सॉफ्टन इन नेचर, और ये कैप्सुलर टाइप का रीजन है, हार्ड प्रोटेक्टिव, दैट इज कॉर्टेक्स. तो हम लोग जब नेफ्रॉन की बात करेंगे, व्हेन वी विल गो टू दैट लेवल, तो ये व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेफ्रॉन in this cortex area as well as medulla. ठीक है, so this is the almost external feature or structure of a kidney. Clear है सबको? Is Yes, it all ma'am. clear? Now internal features में what you will write, function या physiology, that is the total internal structure. So we all know nephron. Nephron क्या है? It is the unit, structural and functional unit of a kidney. ठीक है, and you know that millions of nephron forming one kidney. ठीक है, so the basic feature, kidney means what? Function of nephron. That is why it is told smallest structural and functional unit of kidney. ठीक है, so parts of nephron. First you write the parts of nephron. It is actually 2 parts, 2 reasons. First, Malpighian body. Malpighian body. ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, you will see in next time, that is in the diagrammatic representation. First, Bowman's capsule. That is Bowman's capsule. Second, glomerulus. Second is the glomerulus. Next region or part क्या है, tubular. Tubular region. It is having three parts. First है PCT. Full form is proximal convoluted tubule. Second, loop of Henle. He was a great biochemist and he for the first time told about its structure and function, how it is involved in excretion. Third, DCT,
that is distal convoluted tubule. Have you noted down? Yes? Have you noted down all that point? It is all coming in internal feature. So it is having the two part. Nephron is having two part. First, Malpighian body. It consists two part. Bowman's capsule ऐसे capsular region होता है. And second, glomerulus inside the capsule, cup shaped structure. This is the glomerulus. Next part is tubular region. It is having three parts. First, PCT, that is proximal convoluted tubule. Second is loop of Henle. And third is distal convoluted tubule. In short, we write DCT. Is that all clear? Now see, what is the function? How does a nephron acts and helping out for removal out of waste? तो function क्या है इसका? Three function. First, that is ultrafiltration. ठीक है? Ultrafiltration. Is that clear? Second, reabsorption. ठीक है? And third, secretion. These are the three functions of a nephron. तो ये क्या हो गया? अगर क्वेश्चन आ रहा है 3 marks का, सपोज कि राइट द फंक्शन और फिजियोलॉजी ऑफ अ किडनी, तो डोंट गिव द एक्सटर्नल फीचर, ओनली गिव द diagrammatic view of nephron, level it properly and write the 3 function. You will write how the nephron acts. अब just see structure you have seen, and this is the function. You can make this diagram first. This is the you are seeing here. डायग्राम क्लियर है सबको? Yes, ma'am. ये देखो, ये दिस इज एरो देख रहे हो, ये है एफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है? एंड दिस इज आउटगोइंग, दिस इज इफरेंट आर्टेरियोल. ठीक है? ये देख रहे हो कप के जैसा स्ट्रक्चर, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है? और ये जो देख रहे हो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर, दैट इज ग्लोमेरुलस. Is that all clear? Now see, you show the arrow, how the filtrate moves. Is that clear? अब देखो, this is arteriole. What is मैम arteriole? एफरेंट के बाद क्या लिखी है? कौन? ये जस्ट Yes, आई एम ma'am. रीडिंग इट आउट. ये है, ये जो एरो देख रहा हो, दिस इज एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट आर्टेरियोल. और ये जो देख रहे हो आउट गोइंग, दिस इफरेंट आर्टेरियोल. और ये जो कप के जैसा स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज बोमेन्स कैप्सूल. ठीक है? और इनसाइड ये ब्रांच्ड क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज ग्लोमेरुलस.
ठीक है, ये देखो इसको कहते हैं PCT, प्रॉक्सिमल, लिख लेना ब्रैकेट में, प्रॉक्सिमल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। एंड दिस इज, ये जो सेकंड लूप देख रहे हो, दिस इज DCT, डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल। और ये जो है दैट इज लूप ऑफ हेनले। ठीक है, ये पूरा स्ट्रक्चर है नेफ्रॉन का। एंड दिस टाइप ऑफ लेवलिंग you will do. Is that all clear? Now function, Yes, ma'am. I have written here 3 function: ultrafiltration, reabsorption and secretion. So just see how it happens. ये क्या शो कर रहा है? this arrow showing taking blood to this part. Blood is carried to this part. And just recall in circulation what I told. पहले aorta, then distributed in artery, then arteriole, then capillaries. तो ये वही arteriole है, ठीक है, ब्रांचिंग ऑफ aorta. तो नेचुरल है कि arteriole बहुत थिन डायमीटर है, वेरी थिन डायमीटर. तो ब्लड यहाँ कैसा आता है? ऑक्सीजनेटेड but carrying the nitrogenous waste. What type of blood? Maybe a question for MCQ. If 4 options will be given, don't think कि वो kidney है तो deoxygenated blood आएगा. No, it is coming here for getting ultra filtered. ठीक है? So which type of blood is carried here? Oxygenated but carrying nitrogenous waste. Is it all clear? Yes, ma'am. Now अब देखो, ये आर्टरी से कैरी हो रहा है और जैसे इनसाइड आया, ये कप के जैसा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, वुमेन्स कैप्सूल, जैसे यहाँ आया, इट गेट ब्रांच नंबर ऑफ टाइम और जस्ट सीन एज कॉइल्ड स्ट्रक्चर. अगर एक्सटर्नली इसको व्यू करोगे तो ये उलझा हुआ कॉइल्ड स्ट्रक्चर दिखेगा. तो दिस इज व्हाट? इट इज ओवर ब्रांच नंबर ऑफ टाइम. एंड आर्टरी व्हेन गेट ब्रांच, उसको क्या कहेंगे? आर्टेरियोल. एफरेंट मीन्स टेकिंग ब्लड, इफरेंट टेकिंग आउट. ठीक है, तो ये ब्लड यहाँ आया, जस्ट आई हैव टोल्ड. कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड बट कैरिंग मेटाबॉलिक नाइट्रोजनस वेस्ट. ठीक है, तो यहाँ पे आया तो ये क्या हो गया? आर्टेरियोल है. ठीक है, आर्टेरियोल मीन्स नंबर ऑफ टाइम्स ब्रांचिंग ऑफ आर्टरी. ठीक है, तो यहाँ ब्लड यहाँ पे है. ठीक है, तो इस रीजन में फर्स्ट फंक्शन व्हाट आई हैव रिटन दैट इज अल्ट्राफिल्ट्रेशन. Ultrafiltration. ठीक है, कैसे होगा? जैसे सिंपल घर में देखते हो हमेशा कि व्हेन टी इज प्रिपेयर्ड हाउ इट कैन बी फिल्टर्ड. तो जैसे फिल्टर करते हो तो टी नीचे आता है, लीफ तो नहीं आता है, या ग्रैन्यूल्स नहीं आता है. इट इज ऑल स्ट्रैंडेड इन दैट फिल्टर. ठीक है, तो जस्ट लाइक दैट. और यहाँ पे कैसा फिल्ट्रेशन है? अल्ट्रा, वेरी माइन्यूट फिल्ट्रेशन. इमेजिन. तो जैसे यहाँ आया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इज हैपनिंग. अल्ट्रा फिल्ट्रेशन के बाद जो फिल्टर्ड आउट है मटीरियल, लिक्विड मटीरियल, उसको हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ एनी वन हैविंग द किडनी प्रॉब्लम, एक्यूट किडनी प्रॉब्लम, तो ये GFR,
ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट, इसको टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज व्हाट, ये जो फिल्टर्ड आउट सब्सटेंस है, मटेरियल है, लिक्विड है, इसको हम क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। चूंकि इसका फिल्ट्रेशन यहाँ से हुआ है थ्रू ग्लोमेरुलस, सो इट इज नेम्ड ऑन दैट बेसिस, इट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जो भी पार्टिकल्स उसमें होंगे वो दैट विल बी स्ट्रैंडेड इनसाइड द ग्लोमेरुलस। ठीक है, तो ये जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है, नाउ इट विल मूव अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ट्यूबुलर रीजन। और जैसे यहाँ पे आता है पीसीबी, तो सबसे पहले क्वेश्चन मे बी फॉर 1 मार्क्स ऑल्सो, राइट द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। क्या क्या होता है इसमें, salt, I have told you in the class if you recall, salt, glucose, water, vitamins, urea, इतने सारे materials इसमें present होते हैं, that is glomerular filtrate। is that clear? तो जैसे यहाँ glomerular filtrate आया, what happens, almost all glucose, it's very important part, all glucose kept absorbed and sent back to circulation। is that clear? अब यहाँ आप Yes, पूछें कि how it goes to circulation, how it goes back, तो you recall in transportation of substances I have told two type of transport, active and passive। Passive along with the water current, that is from higher to lower flow, it's easy, that is passive, diffusion जिसको कहते हैं। this is when anyone is going against the stream। हमने बताया था ना एग्जाम्पल स्विमिंग का, अगर वाटर का डायरेक्शन इधर है, इफ यू हैव टू स्विम, यू कैन स्विम वेरी इजीली विदाउट एनी एफर्ट। लेकिन अगर कहा जाए अगेंस्ट द वाटर करेंट यू हैव टू स्विम, तो क्या होगा, यू हैव टू एक्सर्ट मोर एनर्जी, यू नीड मोर एनर्जी। तो जस्ट लाइक दैट, ये जो एक्टिव है, व्हेन ग्लूकोज इज एब्जॉर्ब्ड, इट शुड नॉट बी वेस्टेड, इम्पॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है बॉडी का। तो आफ्टर रीएब्जॉर्प्शन it will send back to blood, involving what, active transport। that may be a question for MCQ। am I clear to you? yes, ma'am. तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में ये तो ग्लूकोज की बात हुई, and the rest materials are present there। now from here it will go to the loop part, ऐसे लूप का स्ट्रक्चर। ये जो ट्यूबुलर पार्ट है लूप, इसको कहते हैं लूप ऑफ हेनले। तो यहाँ देखो ट्यूबुलर के बाद जैसे ये कर्व डाउन होगा तो थोड़ा इसका डायमीटर कम हो जाता है। तो व्हेन पासिंग थ्रू दैट एरिया, मैक्सिमम वाटर, नॉट ऑल, maximum water that is present in glomerular filtrate, it is going through, flowing through under very high pressure। ठीक है, तो due to very high pressure flow, maximum amount of water is absorbed here। ठीक है, maximum amount of water, क्यों, क्योंकि pressure is very high, फ्लो प्रेशर इज वेरी हाई। तो यहाँ क्या होगा, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर इज एब्जॉर्ब। अगर हम अभी एक क्वेश्चन पूछें कि वाई वाटर इज एब्जॉर्ब हियर, इफ नॉट एब्जॉर्ब, तो क्या होगा, यही कारण है कि इफ इट इज हैपनिंग नंबर ऑफ टाइम्स एंड ऑलवेज, इट विल बी अ बैड साइन फॉर फंक्शनिंग ऑफ। इसलिए जिसको
किडनी का प्रॉब्लम होता है, frequent urination, because loop of Henle is not, other reasons भी है allied, but the reason is also here what, that water is not reabsorbed here, water absorption नहीं हो रहा है, या in comparison to the optimum it is very less, ठीक है. Then it will go where, DCT. सेकेंड जो कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल है जिसको कहते हैं डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल, यहाँ क्या होता है, अगर देखोगे तो यहाँ पे पूरा नेटवर्किंग होगा ब्लड कैपिलरीज का, ठीक है. तो ब्लड विल बी, यहाँ सिक्रीशन होता है, एंड बेसिकली टू materials, that is creatinine and excessive sodium, that is a very bad sign for malfunctioning of the kidney. तो यहाँ जो नेटवर्किंग है ब्लड कैपिलरीज का, that will give to this one, डिफ्यूज आउट होगा, और जब एक्सेस क्रेटिनिन और सोडियम है that will be secreted, ठीक है. और आफ्टर दैट ये देखो, ये जो मेन डक्ट यहाँ देख रहे हो दैट इज कलेक्टिंग, ये क्या है, कलेक्टिंग डक्ट जो अटैच्ड है डिस्टल कन्वॉल्यूटेड टिब्यूल से, ठीक है. तो यहाँ के बाद जब मटेरियल्स आता है तो दैट टाइप ऑफ यूरिन that is less than 2% of urea, ठीक है. micturition one term is there, I have told already, formation of urine, ठीक है. तो इसमें क्या होगा, when the micturition process has been off, then the urine containing less than 2% urea, ठीक है. and ये कलेक्टिंग डक्ट में है, ऑल कलेक्टिंग डक्ट, इमेजिन कि कितना नेफ्रॉन है, मिलियंस. सो ऑल कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द नेफ्रॉन विल पोर डाउन वेयर, याद है एक्सटर्नल फीचर में हमने बनाया था डायग्राम में, पेल्विस, डिप्रेस्ड लाइक स्ट्रक्चर, ऑल कलेक्टिंग डक्ट टेकिंग दिस secretion to the pelvis. Is that clear? Now I think up to this extent clear हो गया होगा. Yes? Yes, ma'am. Okay. तो यहाँ जब collecting duct will open where? Pelvis. ठीक है. और ये जो ऐसे देखे थे, ये ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर था, that was ureter, ठीक है. और ये जो यूरेटर है इसमें देखो ऐसा है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर, और चूंकि 2 किडनी है तो 2 यूरेटर यहाँ ओपन होगा, इसलिए इट हैज 3 ऑसिफाइसेस, 2 फॉर द यूरिनरी डक्ट and 1 this is the urethra. 3 orifices may be a question for MCQ, don't get confused, it is always 3 orifices, 2 for the opening of urinary duct and the last one that is urethra. होता क्या है, urine has come over here, urinary bladder, और inside ब्लैडर में होता क्या है, स्प्लिंटर मसल. जस्ट रिकॉल, इन न्यूट्रिशन आई मस्ट हैव टोल्ड विद द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन रिलैक्सेशन इन एनल ओपनिंग दैट फीसेस कम आउट. लाइकवाइज हियर, यहाँ जब यूरिन का कलेक्शन हो गया, व्हेन यूरिनरी ब्लैडर इज फुल, then with the relaxation and contraction of the muscles, sphincter muscles present here, one like to urinate.
Is that clear? Through urethra. Now tell me, और ये जो दोनों end है, one is ascending and second is descending, ठीक है? और this is यहाँ पे vasa recta होगा, other thing also, but I think the physiology, basic physiology of kidney, that is all finished. Is it all clear or any problem in this contest? Any problem you have? Then raise your hand and ask me. Any problem? I think there should not be. So, this you will write yourself. ठीक है? खुद से लिखोगे, then you will be in practice to write कि कैसे क्वेश्चन को कैसे लिखना होगा. If 5 mark question, then what content you will write. If the 3 marks, what content you will write. So that way you just get the categorization of the answer, writing answer. But I have always recalled you write according to the distribution of marks. अब 3 marks का है, 2 पेज लिख दोगे, no use. You write the facts. Don't fill up the pages with unnecessarily not required at all for that particular answer. Is that clear? Now just have a introductory look according to the time. Respiration. How you will define it? How you will define respiration? हमने बताया था ना, respiration is very important, vital part है. If it is not, we are not living. सबको पता है ये basic answer, basic process. तो respiration, when you are very much tired, तो क्या होता है? You are just sitting for a while. You need for some minutes to take breathe. ठीक है? तो वैसे स्थिति में क्या होता है, अगर तुम बहुत एक्सर्ट कर लिए हो, बहुत रन कर लिए हो, तो क्या होता है? When you sit for a time, for 1 minute, 2 minute, और rate of respiration उस समय increased हो जाता है, तो क्या होता है? You get relief, you feel fresh. तो on the whole respiration, whether internal or external, how you will define that? It is a conversion of chemical energy into metabolically usable energy. Chemical energy correlates to what? Food contents, what you have. तो ये conversion है किस चीज का? Chemical energy into metabolically usable energy. What you utilize when you take the food, after some time you feel energetic. तो ये क्या हुआ? ये food जब churn out हुआ और when it gone to the digestive tract and how the maximum absorption taking place, तो क्या हुआ? ATP release होता है and you get relaxed. तो respiration is what? It is the conversion of chemical energy into metabolically usable energy that you use for your any type of work, any type of metabolic functions. ठीक है? Internal, external respiration. Internal is what? That is happening in the cell, जिसको cellular respiration कहते हैं. ठीक है? वो internal respiration, it is of 2 types, aerobic, anaerobic. Aerobic is what? Respiration happening in presence of oxygen. ठीक है? Anaerobic, in absence, when oxygen is not involved. तो क्या होगा? वैसे respiration को कहते हैं anaerobic respiration. ठीक है? That is a part of glycolysis.
इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, ग्लाइकोलाइसिस। तो सेल है, ठीक है, दिस इज द साइटोप्लाज्म। दिस इज सेल, सेलुलर रेस्पिरेशन। ये सेल है, इनसाइड क्या है, साइटोप्लाज्म। तो ग्लाइकोलाइसिस इज व्हाट, ब्रेकिंग डाउन ऑफ one molecule of glucose into two molecules of pyruvic acid। ये क्या होगा, two molecules of one glucose into two molecule of pyruvic acid, ठीक है। तो दिस पायरुविक, कितना पायरुविक एसिड बना, 2 मॉलिक्यूल। और ये केमिकली क्या है, इट इज ऑफ 3 कार्बन एटम कंपाउंड, ठीक है, इट इज ऑफ 3 कार्बन एटम कंपाउंड। इज दैट क्लियर? तो इफ यू रिकॉल वन कंसिडरेशन आई हैव टोल्ड कि ये pyruvic acid, whether aerobic or anaerobic, it has to be formed। pyruvic acid तो बनना है सेलुलर रेस्पिरेशन में, या एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो pyruvic acid हम कह सकते हैं इट इज द कॉमन बाई प्रोडक्ट आउट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, आउट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। अगेन क्वेश्चन फॉर MCQ, इट इज द कॉमन बाई प्रोडक्ट, ठीक है, ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। तो व्हेन pyruvic acid is formed, then consideration lies। वो कंसिडरेशन क्या है, क्योंकि अभी ये जो बना था साइटोप्लाज्म, इट वाज ब्रोकन, ग्लूकोज वाज ब्रोकन इन साइटोप्लाज्म एंड दैट इज ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। तो आफ्टर pyruvic acid, 2 consideration, एक क्या है, when oxygen is present, और दूसरा ऑक्सीजन इज एब्सेंट। अगर इसके बनने के बाद ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल बी स्ट्रैंडेड, ठीक है। ऑक्सीडेशन मीन इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑक्सीजन, रिमूव आउट ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ जो रिमूवल आउट है हाइड्रोजन का, दैट विल बी ब्लॉक्ड। एंड लास्टली फॉर्मिंग व्हाट, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इट विल बी एंड प्रोडक्ट कहते हैं इसको, कि एंड प्रोडक्ट इन anaerobic respiration or glycolysis is what, ethyl alcohol and carbon dioxide, ठीक है। अब है दूसरा कंसिडरेशन, इफ ऑक्सीजन इज स्टिल अवेलेबल आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ pyruvic acid, ठीक है, देन ऑक्सीडेशन प्रोसेस इज कंटिन्यूड, removal out of hydrogen is also there, and lastly it will form carbon dioxide and water. Any problem? Tell me any problem you have. You must recall this process, इसलिए 1 मार्क का क्वेश्चन बहुत कॉमन है, राइट द कॉमन पाथ of the respiration।
तो रेस्पिरेशन में क्या होगा, निश्चित है कि सेलुलर रेस्पिरेशन, ये बात कही जा रही है इंटरनल रेस्पिरेशन के बारे में। तो कॉमन पाथ इज व्हाट, साइटोप्लाज्म। ठीक है, यहाँ तक का प्रोसेस या एरोबिक हो एनएरोबिक हो, दैट इज द सेम अप टू फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड। अब इसके बनने के बाद ये तय होगा कि ऑक्सीजन इज अवेलेबल और नॉट। इफ नॉट, this will end. Removal out of hydrogen will be blocked, and lastly forming ethyl alcohol and carbon dioxide. Example क्या है? Tell me one example. What will be the example? Yeast in plant cell. ठीक है? And here when oxygen, Mitochondria. हाँ, ये क्या नहीं, ये तो माइटोकॉन्ड्रिया। If oxygen is available, then what will happen? ये पहले 2 कार्बन एटम कन्वर्ट होगा, ठीक है, बिफोर गोइंग टू द माइटोकॉन्ड्रिया। हाउ इट विल कन्वर्ट? रिलीजिंग 1 कार्बन एटम, ये 3 कार्बन एटम कंपाउंड है ना, तो इट विल रिलीज आउट 1 कार्बन एटम इन फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो नेचुरल है, chemical structure is changed. Now this pyruvic acid, after releasing out 1 carbon atom in form of carbon dioxide, now it is known as what? Acetyl coenzyme A. Is that clear? Then that material, that product will get entry in mitochondria. ठीक है? और माइटोकॉन्ड्रिया में the rest conversion will be happening, and first form, it may be a question for MCQ again. What will be the first product formed during aerobic respiration or during Krebs cycle? What will be the first product? Citric acid, which is of 6 carbon atom compound. ठीक है, उसको Krebs cycle भी कहते हैं। Krebs, he was a biochemist, and Krebs cycle means starting from formation of citric acid coming to the same end. So this is all about internal respiration. Now everything must be clear, I think. It's all Yes, the ma'am. revision part. So beta, you do one thing, that again I am telling you, search out the long questions from your book and try to write yours. You write yourself, don't copy from anywhere, then you will gain confidence. ठीक है? And in next class we will be meeting again with number of problems selected by you people, and as the class starts, one by one you raise your hand and ask the problem. ठीक है? Now any query you have? No? So should I end the class? Meeting Yes, ma'am. in the next class. Till then, bye.